Hello everyone, this is Anshika. Welcome back to my YouTube channel. Today is the day 11 of non-nursing series and today's topic is important questions of computer. तो आज की सीरीज में मैं कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन कराने वाली हूँ जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं और एक या दो दिन भी मैं क्वेश्चन कराऊंगी जो प्रीवियस ईयर कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए थे या फिर जो इम्पोर्टेंट हो और पूछे जा सकते हैं वही क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी। उसके बाद रीजनिंग और मैथ कंटिन्यू करेंगे और एक क्लास अगर टाइम मिला तो इंग्लिश की भी कर लेंगे। तो इन सब क्लासों में वही डाटा कराएंगे जो प्रीवियस ईयर पूछा गया है या फिर पूछा जा सकता है। ठीक है। So the first question is the brain of the computer is options are option A monitor, option B CPU, option C hard disk, option D keyboard. So the correct answer is option B CPU. CPU is considered the brain of the computer. It performs all processing operations and control the activities of all other components. Question number 2. Which of the following is the volatile memory? So the options are option A ROM, option B RAM, option C hard disk, option D CD-ROM. So the correct answer is option B RAM. Random access memory is a volatile memory. It loses its data when the power supply is switched off. तो एक होती है वॉलेटाइल मेमोरी, एक होती है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल मेमोरी जिसका मतलब है पावर या इलेक्ट्रिसिटी जाते ही वो अपना डाटा भूल जाए, जैसे कि रैम, और पावर ऑन करने पे डाटा अवेलेबल हो। ठीक है। और रोम ऐसी है जिसको पावर ऑफ होने पर भी डाटा जो है वो जनरली सेफ रहता है। तो रोम को हम नॉन वॉलेटाइल कहते हैं। ठीक है। Third is what is the full form of ROM? Options are option A read only memory, option B random only memory, option C read open memory, option D run only memory. So the correct answer is option A read only memory. ROM stand for read only memory. It is a non volatile memory in which data is permanently stored. Question number 4. Which of the following is an input device? Options are option A monitor, option B printer, option C keyboard, option D speaker. अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा है कि तुम टेस्ट दे रहे होगे तो उसमें भी तुम्हें देखने को मिल जाता होगा और प्रीवियस ईयर भी पूछा गया है और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आगे भी पूछा जाए, है ना। तो ये जितनी भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं ये आप अच्छे से एक बार देखना। ऑप्शंस so the correct answer is option C keyboard. A keyboard is used to input data and command into the computer. It is an input device. बाकी के सारे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर ये क्या है हमारे आउटपुट डिवाइस है। Which of the following is an output device? Options are option A mouse, option B scanner, option C monitor, option D keyboard. So the correct answer is option C monitor. A monitor displayed the processed information, text, images, videos on the screen. It is an output device. तो मॉनिटर, प्रिंटर, साउंड मीन्स स्पीकर एंड प्लॉटर ये हमारे क्या हैं, ये हमारे सारे के सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। So the question number 6, 1 byte is equal to options are option A 4 bits, option B 8 bits, option C 16 bits, option D 32 bits. So the correct answer is option B 8 bits. 1 byte is equal to 8 bits. A bit is the smallest unit of data. देखो, अब ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ ये प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं तो आप इनको एक बार अच्छे से देखना है ना। Question number 7. Which software is used to browse the internet? Options are option A MS Word, option B Google Chrome, option C MS Excel, option D PowerPoint. So the correct answer is option B Google Chrome. Google Chrome is a web browser used to access and browse information on the internet. कंप्यूटर के क्वेश्चन इतने भी टफ नहीं आते हैं जो तुम कर नहीं पाओ, है ना। तुम कर लोगे, बस एक बार तुम देख लेना। अगर तुमने अभी तक कंप्यूटर पढ़ी ही नहीं है या तुम भूल गए हो तो एक बार ये नॉन नर्सिंग सीरीज में आपको मैं जितना भी कराऊंगी वो देख लेना, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 8, विच शॉर्टकट की इज यूज टू कॉपी सेलेक्टेड टेक्स्ट? सो ऑप्शंस आर option A control plus X, option B control plus C, option C control plus B, option D control plus Z. So the correct answer is option B control plus C. Control plus C is the shortest key used to copy the selected text or data.
तो ये ना मैं कल आपको करा दूंगी वन लाइनर के फॉर्म में अलग से, है ना। तो अभी जो क्वेश्चन है वो देख लो, कल मैं इसको अलग से करा दूंगी क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। और अभी शायद नॉट 10 में भी इससे क्वेश्चन आया था। Question number 9. Which shortcut key is used to paste copied text? Options are option A control plus P, option B control plus X, option C control plus V, option D control plus A. So the correct answer is option C control plus V. Control plus V is used to paste the copied data or content at the desired location. Question number 10. Which shortcut key is used to undo an action? Options are option A control plus Y, option B control plus Z, option C control plus U, option D control plus I. So the correct answer is option B control plus Z. Control plus Z is the shortcut key used to undo the last action performed. Question number 11. Which of the following is an operating system? Options are option A MS Word, option B MS Excel, option C Windows, option D PowerPoint. So the correct answer is option C Windows. Windows is an operating system that manages computer hardware and software resources. Question number 12. In MS Excel, the intersection of a row and column is called as options are option A table, option B cell, option C sheet, option D chart. So the correct answer is option B cell. In MS Excel, the intersection point of a row and a column is known as a cell. Question number 13. Which memory is non-volatile memory? Options are option A RAM, option B cache, option C ROM, option D register. So the correct answer is option C ROM. ROM, read-only memory, is non-volatile memory. It retains data even when the power is switched off. Question number 14. Which device is used to convert a hard copy into digital form? So the options are option A printer, option B scanner, option C monitor, option D speaker. अब बहुत सारे बच्चे बोलते हो कि ऑप्शंस मत दिया करिए, वन लाइनर के फॉर्म में कराइए। तो अभी मैं अगर ये ऑप्शन नहीं देती तो तुम सारे के सारे प्रिंटर ही करते, है ना, बिना क्वेश्चन को पढ़े हुए। बट इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी स्कैनर। Scanner is used to scan documents, photos, or images and convert them into digital form that can be stored in a computer. Question number 15. Which of the following is a search engine? Options are option A Microsoft Word, option B Google, option C Windows, option D MS Excel. So the correct answer is option B Google. Google is a search engine used to search for information available on internet. So these are the 15 questions of today's non-nursing series, and now we continued functional keys F1 to F12. F1 is help, open the help menu window. F2 rename, use to rename a selected file and folder. F3 is used for search, open the search find function. F4 is used for address bar, displays list of address in address bar. F5 is used for refresh, refreshes the active window and web page. F6 is used for move to address bar, moves cursor to address bar in many browsers. F7 F7 is used for spelling and grammar, open spelling and grammar check in MS Word. F8 is used for boot startup options, used for startup boot option in the Windows. F9 is used for refresh and update, refreshes or update field records in the some applications. F10 F10 is used for menu bar, activates the menu bar in the current application. F11 is used for full screen, toggles full screen mode in many browsers and applications. F12 is used for save as or developer tools. Open save as in MS Word, developer tool in browsers. So these are the functional keys. और कल मैं आपको शॉर्टकट कीज करा दूंगी जिससे नॉट सेट में अभी भी क्वेश्चन आया था और प्रीवियस ईयर बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं और हर बार आने के चांसेस रहते हैं।
तो आज की ये सीरीज़ आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ऑल द बेस्ट।